अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। So I think I'll be example last year. You would you see Good evening, sir. Exam started these days. How in 1 week is it? 2 weeks. How was our SST? How was our SST? So, math, that's also. It was a 40 marks paper, right? Then it should be a test, not an exam. So who got 20 out of 20? Good. But what we will see? We will see. I can't see. Hey, listen, political science or civics. You said portions of Hindi. Which chapter is emergency for you? कौन किया बाबा? चलो, which chapter I was continuing? Huh? Take in your notebook. If you want politics, if too much portion is pending, I'll take one chapter. I'll inform the department so that your portion. How many chapters are done in civics? Only one. That half. Second is going on. Going on? Yes. And which school is going to have exams? When? And politics में कुछ है जो portion में आ रहा है वो तो खत्म हो गया. Second, partially. Okay, there is no urgency. Because last time you guys were revolting, no? I thought if it is urgent, I'll do one call. Okay, tell me what I was doing. 17. Oi.
नोटबुक लेके मुझे सब जल्दी टॉपिक बताओ. I remember I was doing that energy na, conventional and non-conventional. No, last stuff मेरा नहीं था. हाँ तो ये क्या A petroleum is a nodal industry, correct? That is what she has written. So write the next very important. Last class there is मेरा हुआ क्या? नहीं, I came only for ICSE. So next to petroleum, just check did we do some oil refineries? Put that heading. Important oil refineries in India. Petroleum only. Important oil refineries. Because they ask both area and map. Hey guys, just understand these two. Maybe aata hai refineries. Just understand first. Is oil field and refineries are same? Not same. Yeah. मुझे तो लग रहा है सेम ही है. What is an oil refinery? आता है distinguish. Ah yes, somebody. Sit first bench. अब अंदर जाओ. हाँ बोलो. The word is saying oil refinery. क्या करेंगे हम इधर? Wait. He was answering that slide. Not answering. Okay. Vanshika. Yes, Vanshika. Try at least the word is refinery and others field. Wait. Vanshika only will say. Difference. Those who have it, okay. Just wait. क्या लगता है वंशिका को? Yes, तो yes, stand up and take. Today I am going to leave. People have to answer. Yep. oil preparation, the oil is Refined. हम लोग घर में जो कुकिंग ऑयल आता है वो भी रिफाइंड रहता है. वैसा कुछ रिफाइंड क्या है ना, लिखा रहता है ना पैकेट में. 10th standard CBSE. Yes. Tanish. Stand up. Nothing like. उधर है. By the time she was searching, you could have. Wait. Where is she? Yes, my dear. Hey, what's her name? Who your friend? Tanvi. आप बोलिए बताइए. Guess करो. I don't want a exact answer. Yes, I hope he will give you. Siddharth, na? Then what? What is oil refinery, Kaushik? They separate. You are saying who's this they? Okay, then what is oil field? At least कुछ तो बोला. रिफाइनरी में क्या होता है? रिफाइन होता है. वो क्या होता है? कुकिंग ऑयल निकलता है क्या पेट्रोल से? How is cooking oil referred? I want my children to answer. In studies, cooking oil is referred like this. ये सुना है ना? हाँ तो ये क्या रिफाइनरी ऐसा है क्या? हाँ सर, पेट्रोलियम से एडिबल ऑयल बन गया और तुरंत हम भजिया तलते हुए नजर आए. ऐसा कुछ है? Look at the guess. पेट्रोलियम से मिनरल्स निकलता है. Too good. मैं से भी ना. हाँ, you also. ठीक है? बोलो. जो आपको स्टिक. Anyone? This person. You lead. Boys are too good here. Girls are all lazy ducks. Oil field बता दे. At least उसने oil
Refined What is extracted? which oil? ये कौन सा oil है फिर? Sir, that's not my oil like. Yeah, I'm giving some clues. Let's see. Whoever answers this can sit down. इधर यही होता है. अभी शेल से विंडोज निकलता है सर इधर से. ये तो हाँ. चलो. Who want to sit can answer this and sit down. Sir, total gets refined kerosene petroleum. Very good. Sit down. So can I say this is raw? Yes. Yes. You sit down. हाँ. अभी आगे बोलो. ये क्या है? Oil refinery क्या है? अब रोज ऐसा होना चाहिए. हाँ yes. हाँ. क्यों मैं क्यों? कल तो पूरा पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं. इस मैं भी ट्राई करना दिया. अब इतना दूर से मैं से मेरे लेक्चर के लिए आता है. Refineries in which crude oil is extracted into many other. Extracted. वो तो होता ही. Sit down. Sit down. देखो इधर आके पहला निकलेगा पेट्रोल, दूसरा डीजल, और ये मैंने उस दिन बोला भी था केरोसिन, पैराफिन वैक्स है ना, ल्यूब्रिकेंट्स, देन सीएनजी है ना. ये क्या होता है और ये क्या होता है? एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन ऑयल फील्ड एंड ऑयल रिफाइनरी. इज ऑयल ओएनजीसी ऑयल फील्ड. मैंने ओएनजीसी का तो बहुत ओएनजीसी का फुल फॉर्म बोलो माय डियर और वेट एनीबॉडी. ओएनजीसी फुल फॉर्म जो खड़े हैं वो ध्यान देना है. हाँ ओएनजीसी का फुल फॉर्म उस दिन मैंने नोटबुक में शायद लिखने में बोला था और मैंने बोला वीडियो दिखाऊंगा उसका. ओएनजीसी का बोला था. हाँ वो लेक्चर विल बी स्टैंडिंग. नेवर आई मेक माय चिल्ड्रन टू पनिश. अच्छा बॉयज इनको जरा हेल्प करो. ओएनजीसी का फुल फॉर्म. वेरी गुड. हाँ बोलो. नहीं वो नहीं बोलेगा. कॉपी मारने में भी कुछ तो है. नॉट हाँ मैं ऐसे ही बोले. नहीं देने. हाँ ये सच्ची. यू ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. ये कहाँ है? He has given you the answer. ये कहाँ है? ये भी है. मैंने वो भी बताया था. महाराष्ट्र में किधर? सातारा में है. सांगली में करार में किधर है? हाँ हेल्प हेल्प. हाँ कोस्टल पे होता है. वेरी गुड. बसीम दैट इज अ ओल्डर नेम. You say it is Mumbai High. Hey, you sit down. Please थोड़ा आंसर आया. अभी और 4 लोग खड़े हैं. Now what else you can tell me? क्या है वो जगह का नाम बताओ. गुजरात क्या है? मोदी मोटेरा स्टेडियम बोलता है क्या? हाँ अंकलेश्वर, कलोल, कंबर. Hey guys, listen. Whenever they ask you an oil refinery, say what is extracted. Crude oil is extracted here. Refinery मतलब उस crude oil से हम लोग क्या निकालेंगे? I think आपको साइंस में रहेगा केमिस्ट्री में. डिफरेंट टेम्परेचर पे वो हीट एंड एवोपरेट होता है. फिर उसमें से निकलता है पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट्स और रिलैक्स. ठीक है ठीक. वो नहीं हुआ वो चैप्टर. नहीं ना वो किधर हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हुआ कि नहीं? तो राइट इन योर नोटबुक. Distinguish between oil refinery and oil field. Oil field and oil refinery. जल्दी करना. Distinguish between oil refinery and oil field. तो फर्स्ट साइड क्या लिखा है? ऑयल फील्ड लिखा है कि ऑयल रिफाइनरी लिखा है? ऑयल फील्ड लिखा है. जनरली extraction of crude oil. Generally, extraction of crude oil from main source, from its main source. जैसे सऊदी में जमीन के अंदर से आता है, इंडिया में पानी के अंदर से, सी के नीचे से. From its main source.
अभी आ जाओ ऑयल रिफाइनरी। क्रूड ऑयल after its extraction, where is he looking at others first stage? Crude oil after its extraction, refined at various temperature. Don't say various, different. Refined at different temperature, put a dash, write different products. अभी ये दोनों रीड करो और माइंड में फिक्स करो कि नाउ इज इट क्लियर। ये चारों में से सब लोग इसको अभी बोलना पड़ेगा विदाउट सीइंग। आई नीड टू सिट ना विदाउट आंसरिंग। चलो, व्हाट विल बी द सेकंड पॉइंट मीन टाइम? दीस गाइस आर लर्निंग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है? गेस करो, जो नहीं आता ऐसे लिखना है एग्जाम में। डायरेक्ट यूज है, रिफाइनरी में रहेगा या फील्ड में रहेगा? I understood. मतलब the products which are here can be used. Can we use the crude oil directly? ये second point हो सकता है. Very good. Write down second point. Oil refinery है क्या oil field है? Oil field ना? It cannot be used directly. It cannot be used directly. Oil refinery में आ जाओ. Petroleum, diesel, or kerosene. अभी क्या लिखना है? Can be used directly. क्रूड ऑयल को तो हम गाड़ी में नहीं डाल सकते है ना? गाड़ी बोलेगा ना मैं आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। Come on, let us start. First point. अभी रेडी है, जल्दी बोलो। If you tell without saying stand up and tell, you can remain stand up. One, only the first. Who is ready out of the four? Third point का आइडिया दो। Good. Third point क्या हो सकता है? Which is having high economic value? Crude oil or petroleum products का high value रहेगा। Crude oil you and me will not buy. Who will buy? Government ही purchase करेगा ना? तो उधर लिखो low economic value। मतलब उसका प्राइस बैरल पे आता है ना? अब मैं जाके मेरा कार पेट्रोल पंप में लिखेगा, बोला 10 बैरल भर उसमें, बोले 10 बैरल किधर है भाई तेरे पास? टैंक में भरो, है ना? Here higher economic value. Other side higher economic value. Next out क्या? The boys are giving some lovely points as well as girls also, है ना? Girls to the right word. बोलो yes, तन्वी कौन सा पॉइंट नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग? तो बोलेगा फुल स्टॉप करो, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, any one point. Example last week, then also लिख सकते हैं। तो फिर क्रूड ऑयल ठीक है, I'll put that as a point right up. Crude oil is useful only after refinement. बराबर ना? तो डायरेक्टली का आप और मैं उसको कुछ नहीं करेगा। Is useful only after its refinement. Careful with the word refinement. Refinement. MENT. Refinement. Other side क्या लिखना है? Can be used directly. पेट्रोलियम को मैं रिफाइन करने बोलेगा, पागल है क्या? डाल दो पेट्रोल, है ना, गाड़ी में। And nowadays we have a new petrol. आप लोग कभी पापा के साथ या EB2 करके कुछ पेट्रोल मालूम है? हाँ, वो क्या होता है? कुछ आइडिया है क्या? यार देश का वो क्या EBD2 बोलता है हमको। Will you find out for me by next lectures? अभी पेट्रोल में एक नया वैरायटी का है EBD2। वो
तो मैं डालता हूँ मेरे गाड़ी में हमेशा आई पुट पावर पेट्रोल, यू नो व्हाट इज पावर पेट्रोल, 10 रुपए या 7 रुपए महंगा रहता है, ये अगर 110 है ना वो 117 या 119 रहता है, which will give you mileage and engine को भी थोड़ा, नॉर्मल पेट्रोल भी ठीक है, दैट इज दैट, जैसा भी एचपी का पावर रहता है, बाकी वो दूसरा क्या है एचपी और एक कंपनी कौन सा है बीपीसीएल नहीं रहे, पेट्रोल पंप का नाम बता, इंडियन ऑयल का वो ये रहता है एक्स्ट्रा 95, वो थोड़ा सा माइलेज ज्यादा दे। EBD2 इज नॉट ऑर्डिनरी फ्यूल, यू नो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, अभी थोड़ा बहुत पेट्रोलियम है, दे ऐड फॉसिल फ्यूल सो दैट इसका पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। अभी देखो नया कार जो आता है उसमें चिपका रहता है EBD2, या नया टू व्हीलर में भी आजकल लिखा रहता है EBD2, उसमें वो फ्यूल से लेकर। चलो एग्जाम्पल आप लोग भी लिखो, हमने 0.4 भी है ना, 1 2 3 4, चलो एग्जाम्पल लिखना, ऑयल फील्ड का एक नाम लिखो वॉल्यूम से, ऑयल रिफाइनरी तो आप ONDC भी लिख सकते हैं, ऑयल फील्ड कहाँ है, कहीं से हो, जल्दी करना, then we will explain and try to answer in the class why you guys are so, तो क्या राउंड्स खेलते हैं आप लोग, डम शरास, no doubt oil refinery you can write नहर कटिया, नूनमती, आसनसोल है, वो सब मैप में है, कलोल, कंबर, और ऑयल रिफाइनरी तो अपना मुंबई है ही डाल दो, मुंबई है ही था ऑयल रिफाइनरी। How many times if you have gone petrol pump you have seen, ये पेट्रोल पंप का जो टैंक है ना अंडरग्राउंड रहता है ना, फिर उनको पेट्रोल आता कहाँ से, पाइप से आता है, कैसे आता है पंप, हाँ अंडरग्राउंड में कैसे आता है, वो जो डायरेक्टली खुदता है क्या, फिर कहाँ से आता है पेट्रोल, you might have seen the trucks coming, they only carry and they only empty। मैं जब आप जैसे स्कूल लेवल में था ना तो मुझे लगता है ये लोग डायरेक्टली रिफाइन करके हमारे पेट्रोल अपने वाले पागल है, इतना बड़ा बड़ा पेट्रोल पंप का ट्रक्स नहीं देखा है, which comes and empty themselves, so it is transportation is very dangerous। कोई भी पेट्रोल पंप को ऑयल आके क्या बोलता है पाइप से नहीं आएगा, थ्रू द ट्रक्स ओनली, फिर पाइप से कहाँ जाता है पेट्रोल, ऑयल फील्ड में जाएगा या ऑयल रिफाइनरी में जाएगा, दोनों जगह पर जा सकते, like we are buying from Russia, it comes via ship, Abu Dhabi से पाइपलाइन है, did I say Abu Dhabi and Mumbai is going to get connected, you can go via train, अभी ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट डन हो गया है, तो मिस्टर पाकिस्तान इज वेरी अनहैप्पी, मोदी जी ने ट्रेन इंडिया के अंदर तो खोला है, और लद्दाख उस तरफ तिब्बत जाने के लिए ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट भी उन्होंने पूरा कवर कर लिया है। नाउ अबू धाबी हैज स्पोकन विद मुंबई, हम लोग बुलेट ट्रेन यूज करेंगे और फास्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम यू सी अबू धाबी यू गो बाय नॉट बाय एयर, है ना। So look at the use of petroleum has increased, and which is the very costliest fuel, कौन सा मोड में हम लोग यूज करते हैं, costliest fuel जो अभी, हाँ kerosene costliest fuel, it is for airplanes, you know this अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था, नॉट ब्लास्ट एक्सीडेंट हुआ था, नॉट kerosene, वो हाई क्वालिटी, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए, डेंजरस ट्रबल, एंड उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है। यू नो व्हाट द कमीशन हैज गिवन द रिपोर्ट, जब फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद बैक टू लंदन, जहां से वो आया है, somebody has switched off the fuel knob, अरे एयरप्लेन एक डब्बा है, ये क्या है, ऐसा कोई करता है क्या, नहीं किसी ने फ्यूल नॉब बंद कर दिया, उसलिए फ्यूल नहीं था तो प्लेन क्रैश हो, आई डोंट थिंक दैट इज द रियल रीजन, सम hijacking है, कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट हुआ, बिकॉज दैट प्लेन गेट सर्विस फ्रॉम a neighbor country of Pakistan called Turkey, and Turkey is a bitter enemy to India। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा एयर इंडिया एयरलाइंस का पूरा टेक्निकल चेक करने बोला है, nobody wants to fly from Air India, especially देखो डोमेस्टिक में कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है इंटरनेशनल में हो रहा है, and in that airplane only we had one chief minister of I think one of the state, Gujarat only, he died, so there were some VIPs, and अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है शायद प्लेन का जो एरोडायनामिक्स है हाईजैक भी हुआ रहेगा, चाइना डज इट,
You know, there was one General BP Rawat, Bipin Rawat. उनका helicopter crash हुआ था. He is the biggest army officer in India. He was traveling from one part of Tamil Nadu to hilly region. वो कोई तो military college में lecture के लिए जा रहे थे. And that chopper is considered to be the best chopper in the world. American president भी वही chopper से जाता है, but it crashed. किसी ने बोला bad weather है, किसी ने बोला कितना भी bad weather है ना तो उसके पास double engine रहता है. And जितना भी Boeing है ना airplanes 747 or 777, they are double engine. How come taking off within 20 minutes a plane can crash? It's highly impossible, and all passenger died. फिर बोला pilot was mentally retarded or etc etc. Mentally retarded तो he came from that only ना, Heathrow से अहमदाबाद आया और अहमदाबाद से again it was going back to Heathrow. So why I'm giving all this? Petroleum is सबसे महंगा fuel. It is for airplanes. फिर किसी ने पूछा सर how about rockets? Yeah, वो और एक kind of रहता है, which is very dangerous. I've seen this rocket take off. It should escape the Earth's orbit in minimum possible time. क्यों? वरना उतना बड़ा रॉकेट को खींच के नीचे डाल देता. Because generally a rocket has to move out of the Earth's orbit before gravity can pull it down. And देखा उसका stages रहता है, 3 stages रहता है. एक stage हटते ही जाता. And yesterday or day before yesterday, our Indian astronaut has come back. Who is he? What's his name? You know who is that person? He is the first Indian to go to International Space Station. अभी हमारा गगनयान जो भी बनेगा, गगनयान मतलब पहले बार हमारा रॉकेट इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेके जाएगा. किसी ने बोला सर वो कौन है, राजेश शर्मा, राजेश, that first person. He just went around the space. He did not stay there. So look, you children have a bright opportunity to get into not NASA definitely. I'll say ISRO. 12 के बाद exams रहता है. And once you are qualified, you will get a full-time training. और क्या आप ISRO का बैच लगा के हर रोज आप उतना बड़ा स्टेडियम सेंटर में काम करता है. I've seen that movie. वो कौन सा मूवी था? मिशन मंगल था. वो लेडी है ना उसमें जो काम करती है, एंड पूरी तलते तलते मैडम को आइडिया आ जाता है. सो लुक हाउ सीरियसली हमारा जो नासा है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करता है फेलियर, जबकि हमारा नासा हमारा इसरो बहुत सस्ता है. आईपीएल का जो मैच का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है ना, उसका 1/10 कॉस्ट में हम लोग ने ये मंगलयान जो फिक्स किया था. इट वॉज हार्डली 600 और 450 करोड़, जबकि आईपीएल का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट is 2,000 crores. So no doubt players are getting, है ना? And you and me cheer for IPL more or ISRO more? अच्छा बरो सर, I see. वो तो नहीं चाहिए सर. IPL वो cheer करें. The one that you buy, I don't know, hat, t-shirts, everything goes to IPL only. Can we have people advertising ISRO? कोई बच्चा पूछता भी नहीं. Have you seen the pictures of ISRO carrying the rockets? एपीजे अब्दुल कलाम is seen. एक तो रॉकेट का बॉडी बैलगाड़ी में लेके गए बेचारे, एंड रॉकेट का नोज को आई थिंक एपीजे था, वो साइकिल में रख के पीछे कोई पकड़ा है और बेचारा एपीजे साइकिल धक्का मारता है. व्हाट रॉकेट विल थिंक मुझे स्पेस में भेज रहा है और ये लोग मुझे बाइसाइकिल में लेके जा रहे. दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ इसरो. सो व्हेनेवर यू स्टडी दिस ऑयल फील्ड, पेट्रोलियम, नाउ थिंक हाउ इंडिया हैज ग्रोन अप विद दिस. You know now what India is doing? रशिया से ये लेता है, रिफाइन करता है और पूरा दुनिया को बेचता है. इनफैक्ट लास्ट ईयर का नंबर 1 पेट्रोलियम सेलर वाज इंडिया. सऊदी वाज वेरी अनहैप्पी. क्या सऊदी का वही काम है, ऑयल बेच के वो पैसा कमा रहा है. बट इंडिया परचेज्ड टन्स एंड टन्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया. So this is what India is doing. So next time when you hear what is oil field, what is that oil refinery, याद रखो, ठीक है. Check out the next heading in your volume only. There is formation of coal का हम लोग ने आंसर लिख दिया ना. I remember. Natural gas है ना. Let us allow him to read. Boy, you read natural gas. Keep one volume at your this way. Read. Natural gas. Natural peak and natural gas is an imported clean energy resource found in the case with or without petrol.
Just 1 minute. When I use the word association, what does it mean? When petroleum was to be refined, there was one suspense gas. I use the word suspense. Our geographers were not knowing that natural gas bhi hai. But now we have natural gas in two form, correct? ये किधर use होता है? And then we have LPG. ये किधर use होता है? This is in mainly vehicles, correct? And ये domestic use है. And is CNG better than petrol? Money wise petrol. Money wise better. Is it better to the environment? Yes. But problem कहाँ आता है CNG का कार में? Average is the problem. Petrol can give 14 to 15 kilometers per 8 liter. उसमें क्या बोला? हाँ वो सिलेंडर में होता है ठीक है. Whereas CNG will give almost 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कम ही देगा. But what is the good thing about CNG cars? जब मेरा फ्रेंड के साथ में महाराष्ट्र में कुछ इंटीरियर काम के लिए गया, बहुत इंटीरियर गया, आई थिंक अहमदनगर के तो लेके गया. He filled gas only for 800 rupees. अगर वही पेट्रोल रहता था मिनिमम 5000 से 7000 का पेट्रोल भरना पड़ता. और आते समय भी हम लोग ओनली 1000 रुपए का पेट्रोल CNG हो गया आ गया. हार्डली 2000 रुपीज. 200 रुपए का हम लोग ने स्नैक्स खाया. Can we imagine for you taking a petrol car and going to deep interior parts of 2000 चुपचाप रहो सर जाते समय 15000 हो गया. What does it mean? Cost wise, which is very costly? Petrol. This is cheaper. How about LPG for you and me? But it is very important for the domestic. Because government of India under Narendra Modi ji, what was that scheme he ran through? है ना? ऐसा कुछ था ना spelling? What is this known as? Ujjwala scheme. शायद एक जे expired. I went into Tamil Nadu for some work. Petrol pump fellow. I got a phone from somewhere here, so I was talking in Hindi. तो बंदा बोले सर आपको हिंदी आता है? बोला सर हमारे पीछे ना मोदी साहब का बहुत बड़ा बोर्ड लगा है उसमें उज्ज्वला उज्ज्वला. ये उज्ज्वला का मतलब क्या है? मैंने बोला उज्ज्वला का मतलब कुछ नहीं है. और एलपीजी सिलेंडर के लिए उन्होंने अच्छा बट उज्ज्वला का मतलब क्या? बोला उज्ज्वला मतलब फायर और सब जलने का. अच्छा हम बोलते थे ये लड़की का नाम क्यों रखा है? Because they don't understand Hindi too much. So this is what government of India has done. Now every house has a cylinder connection. You remember when that the Ujjwala scheme was launched? In fact, Narendra Modi was narrating his own family. उनकी मम्मी जंगलों से लकड़ी लेकर आती थी, वो धुआं आंखों में लगता था. ये सब आपको स्टोरी सुना है? हमारे पास माइक्रोवेव से लेकर सब कुछ. But you remember today also there are few families who do not get this. They are using wood only. Have you seen? एक ऐसा आयन का पाइप रहता है. मैंने फायर एक्सटिंग्विशर्स ना मैंने गांव साइड में गया था, मैंने ट्राई किया तो टू ब्लो द एयर, तब जाके वो आग लगता है. अगर ब्लो ठीक से नहीं किया ना पूरा धुआं मुंह में अंदर. And they do it very perfectly. And so eyes, throat irritation. But now with cylinder has reduced all that problem. अभी समझ में आया? Natural gases in CNG and LPG. Go ahead. Go ahead. The things are also the same raw material. Okay. Natural gas is environmental friendly too. Underline that. Is it truly environmental friendly compared to petrol or diesel? Very good. Go ahead. It's less pollution with coal elements. It is considered as a fuel for the present testing because of low carbon dioxide. Present century को क्वेश्चन मार्क डालो, अंडरलाइन करो. और because of low carbon dioxide emission. Why a present century? Because nowadays the increase in carbon dioxide is a trouble. तो अगर उसको reduce करने का तो excess use of which one you have to do? Automatically CO2 will come down. Go ahead. Can be transported easily to pipeline. India is not self-sufficient in production, so we have to import. Underline that word. Not self-sufficient. Next. Reserves and utilization. Large reserves of natural gas have been discovered Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Assam. ब्रैकेट में डाल दो, ये जरूर डाल देता है. ए असम में मैंने पेट्रोलियम में एक नाम देना भूल गया. There is a place in Assam. पेट्रोलियम में कहीं तो लिख के रखना. This is the first oil refinery in India. ये लिख के रखो.
इन पेट्रोलियम, बिग बॉय फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ये असम में है, इंडिया का पहला ऑयल रिफाइनरी बिग बॉय। यहाँ पे पहले भी दिया रहेगा, हाँ दिया रहेगा, दोनों में दिया है, हाँ ठीक। नेक्स्ट along the west coast, Mumbai High and Gulf of Cambridge have large reserves. The used natural gas field have recently been discovered. It's not over the resources. underline Krishna Godavari basin. Production. The 1700 kilometer long Hazira Vijaypura. हाँ उधर ये शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखो, they ask you an exam like this. HBJ pipeline, इंडिया का लॉन्गेस्ट पाइपलाइन एंड गैस पाइपलाइन है, एंड इट इज हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर, 3 स्टेट में घुसता है। और उधर लिखो लॉन्गेस्ट पाइपलाइन फॉर गैस, हाँ, एंड शॉर्ट फॉर्म पे लिख दो HBJ, नाम उधर है, यू नीड टू राइट दैट फुल वर्ड HBJ. Come on everyone, repeat what does H stand for? B and J. Jagdishpur or Pura? What is it? Pipeline. Carrying what? And what is the specialty of this pipeline? Longest pipeline in India. In तो HBJ है ना? CB है क्या? G है? सॉरी विजयपुर ना, पहले इसका नाम विजयपुर था। जैसे यू गो टू हैदराबाद ना, आई हैव सीन यू नो फ्रॉम हैदराबाद, there's a place called Kalburgi now. You should listen to that Hindi. उसका पुराना नाम क्या था कालबुर्गी का? कुछ अच्छा नाम। And their Hindi if you listen ना, की करती रहे, and all झगड़ालू करते। I used to travel earlier normally by train, उसका पुराना नाम भी बोलता हूँ, अच्छा नाम, and वो हिंदी I just love it, हैदराबादी हिंदी लोग, हाँ उधर ही है विजयपुर, अभी उसी को लोगों ने नाम विजयपुर कर दिया, हाँ बट वो बोलकोंडा या ऐसा कुछ है, हाँ वो हिंदी कुछ स्लैंग अलग ही रहता, कैसा कैसा बोलते रहे, ये बोलती रहती हूँ, हाँ अच्छा ऐसा है क्या? वो जब तक आधा एक घंटा हमारे बोगी में घुसते हैं ना, उनका हिंदी सुनते रहो, सफानी टाइप, if I am wrong, earlier it was विजयपुर, now it is विजयपुर। जैसे पहले वो कालबुर्गी स्टेशन का नाम उसको अच्छा, अभी उसको लोग ने कालबुर्गी कर दिया। अभी उन्होंने yesterday there was the CBSE row, तो ना 8th standard टेक्स्ट बुक से कुछ पोर्शन को हटा दिया, और शायद अभी 9th and 10th में भी अभी CBSE घुसेगा। What happened? Akbar the Great, the title has to be removed, the Great. So one community saying, how come you are Cherkani with these things? Some are very happy. अभी start हो गया, है ना? इधर दुनिया इधर वॉर के पीछे पड़ा, इन लोग अकबर द ग्रेट के पीछे लगा। The chapter is removed, and wherever Akbar the Great, अकबर करके आएगा, great नहीं है, because Akbar is considered to be one of the better kings in entire Mughal, but उसका भी कुछ traces मिला जो उसने हिंदू kings को, and in that movie if you have seen ना, जो उसका wife का नाम है, उसका wife का नाम वो नहीं है, it is the mother's name of Akbar, Jodha. Jodhabai is the mother of Akbar, but इधर मूवी में उल्टा दिखा है। So when these movies are, हाँ he's correct, मूवी में वाइफ का नाम जोधा दिखा है, क्योंकि टाइटल मूवी का नाम जोधा अकबर है ना, वो किसने बनाया? आशुतोष वारिकर, कोई ऐसा बड़ा बड़ा मूवी बना, बट रियलिटी में राजपूत वाला बोलता है कि उसका जो मम्मी था उसका नाम जोधाबाई, तो ये लोग ने कुछ उल्टा किया, बट ये हैड अ राजपूत वाइफ, बट पता नहीं वही जोधा है क्या। एंड औरंगजेब एक मूवी है ना जिसमें वो दीपिका पादुकोण आग लगाती है, वो भी हिस्ट्री में है, वो मराठा हिस्ट्री लिया है ना, नहीं मराठा हिस्ट्री, बाजीराव, इवन देयर आल्सो सम मेजर ब्लंडर्स आर देयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं जब आप मूवी बनाएगा ना, पूरा हिस्ट्री को उल्टा मत करो, बच्चे वही पढ़ता है, बट क्या करे, डायरेक्टर कुछ भी अपना कैरेक्टर घुसा देता है। एंड उस मूवी में वो जो कौन सा वो लड़की के लिए जो मरता है, वो लड़की के लिए नहीं मरता, ही डाइज फॉर द मराठा डायनेस्टी, और उधर दिखाता है कि वो लड़की के बेटा पागल हो जाता है, वो मर जाता है। वही हस्बैंड एंड वाइफ है ना, उसका नाम क्या है? संजीत कपूर,
Exactly. Ranveer, हाँ, I really like this. I really like him for this dialogue. क्या चाल का भाग और नजर होना चाहिए. I don't understand too much, but मुझे ना वो मैंने put an arrow वो पीकॉक का 2 टुकड़ा करता है उसका. तब जाके उसको मानते हैं कि he is very sharp. And बालाजी बाजीराव पेशवा was like that only. उसका जो तलवार चलाने का ताकत, एरो चलाने का ताकत और किसी के पास नहीं था. उसका इसने एक्टिंग किया है, मुझे नहीं लगा कि टू गुड एक्टिंग. बट वो लड़की के लिए वो मानता है, आई डोंट थिंक सो. उन्होंने इसकी तरह चेंज कर दिया. फिर एक मूवी है जिसमें वो डिप्स वगैरह मारता है एक टाइम पे 320 डिप्स. दैट इज करेक्ट. ही वाज वेरी टॉल एंड हेफ्टी फेलो. वो और एक मूवी है इसमें अनिल कपूर का ब्रदर का और लड़का कोई तो है, कोई तो कपूर है ना. ये मलाइका अरोरा किसे किया उसको. I don't remember. Why I'm saying many histories na, they have shown that India was a very rich country. Even here, I don't know how many of you know, very soon South African plate, your continent say, one continent will join India and India will experience minus temperatures throughout the year. And Himalayas ka foothills mein they found petroleum. Himalayas foothills क्यों जा रहा है? अंडमान में अभी पेट्रोलियम का भंडार मिला है. अभी मोदी जी बोला कि और 1 साल में उसका हम लोग रिफाइनिंग स्टार्ट करेंगे. दिस इज व्हाट इंडिया इज गोइंग थ्रू. एंड इंडिया विल मे बी आफ्टर बाय द टाइम यू बिकम माय एज यू विल सी इंडिया माइट बी अ सुपर पावर. अमेरिका बोलेगा थोड़ा लोन दे दो. हाँ देंगे टेंशन ना. बिकॉज अभी ब्रिक्स करके एक समिट हो रहा है. उधर इंडिया ने बोल भी दिया कि हम डॉलर को हटा के हम लोग एक नया करेंसी लाएंगे और वो करेंसी डॉलर से डबल वैल्यू रहेगा. तो मिस्टर ट्रम्प ऑलरेडी कुछ ना कुछ बड़बड़ करता रहता है. नाउ इज इन द हॉट सीट. उसको सिर्फ कुछ भी हो जाएगा ना एक नोबेल प्राइज चाहिए. नोबेल प्राइज फॉर व्हाट यू नो? पीस. उसलिए वॉर चलता रहता है. खुद ही बोलता था आई ओनली. हाँ बिकॉज उसका पहले एक प्राइम प्रेसिडेंट था. व्हाट वाज हिज नेम? जो बाइडेन. नॉट जो बाइडेन. उसके पहले बैरक ओबामा. ही गॉट अ नोबेल पीस प्राइज और उसका नाम पूरा हिस्ट्री में लिखा है. तो ये भाई साहब को लगता है इंडिया पाकिस्तान स्टॉप द वॉर ऑन देयर ओन. इसने न्यूज में डिक्लेयर कर दिया नहीं मैंने पीस लाया. अभी ईरान और इजराइल और व्हाट इज दैट रशिया एंड व्हाट इज दैट अदर कंट्री यूक्रेन. रशिया जिस दिन ये बोलता है कि मैंने स्टॉप किया, रशिया उस दिन ज्यादा अटैक करता है यूक्रेन. रशिया बोलता है सॉरी आई विल नॉट लिसन टू ट्रम्प. So look what this entire sector is going through, and Russia is the biggest supplier of this natural gas. पूरा यूरोप को सप्लाई करता है. Carry on. Nigeria, Vijaypura, Jagdishpura, cross country gas pipeline links Mumbai high with pricing. It supplies a. But see, उधर लिखो old name of island. Everyone knows India was made up of 7 islands. Sorry, Mumbai. उसमें से एक आइलैंड ये है बसीन, सियार, सॉल्सेट और भी मैं बोलता हूँ. आप एक प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है चर्च गेट में. हाँ 7 आइलैंड्स. ये गेट ऑफ इंडिया में जो किंग और क्वीन का नाम लिखा है ना, उन्होंने इस आइलैंड को जोड़ के फिर उसको मुंबई बनाया. ये मालूम नहीं था. रेक्लेमेशन मिट्टी भरना. वरना बॉम्बे वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू व्हाट इट इज टुडे. बॉम्बे इज ह्यूज बिकॉज ऑफ दिस क्वीन विक्टोरिया एंड दैट चार्ल्स. एंड अगर आप गेट ऑफ इंडिया का वो ऊपर जूम करेंगे ना, उसमें लिखा रहेगा टू कमेमोरेट द अराइवल ऑफ प्रिंस चार्ल्स एंड क्वीन विक्टोरिया. वो शादी करके पहले बार मुंबई आ रहे थे तो इसलिए वो एंट्रेंस बना जो इट्स टूरिस्ट वन. यू डोंट नो ऑल दिस नो. एग्जैक्टली इरोस थिएटर के सामने एक बड़ा म्यूजियम है. वो पहला जहांगीर आर्ट गैलरी था, अभी वो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया. उधर आप अंदर जाएंगे ना, मुंबई का पूरा 7 आइलैंड्स का डिटेल है और छोटा छोटा आइलैंड था. But then slowly इतना बड़ा मुंबई है. Carry on. It supplies gas to the fertilizers, powers, industrial complexes. ये सब ब्रैकेट में डाल दो. What all the natural gas is used for? This artery has provided an impetus to India. Underline that word impetus. उधर लिखो support. Simple word. Wait. Underline. What are you doing? Oh, where's yours? पीछे मारा. हाँ. India's gas production. The power and fertilizer industries
are the key users of natural Underline key users, especially fertilizer. Huh? use of compressed natural gas CNG for vehicles to replace liquid fuels is gaining wide popularity. तो आप लोग एग्जाम में लिखने का यूजर्स यूज्ड इन व्हीकल्स बस वही अंडरलाइन कर बस रिप्लेस वो सब नहीं लिखने नेक्स्ट Electricity. Electricity has a wide range of applications as well. Its per capita consumption is considered as an index of development. अंडरलाइन दैट वर्ड पर कैपिटा मतलब इंडिया में कितना लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हैव यू सीन एनी डेवलप्ड कंट्रीज स्ट्रीट एटलीस्ट टीवी में देखा है एलए देख लो या इवन सिंगापुर को भी देख लो बड़ा बड़ा जायंट स्क्रीन रहता है फॉरगेट अबाउट द नाइट इवन ड्यूरिंग द डे टाइम द स्क्रीन्स आर ऑल मूविंग एंड ग्लिटरिंग आप मरीन ड्राइव में देख सकते हैं हाँ उतना नहीं है देन आई हैव गॉन टू इवन मेन पार्ट्स ऑफ टोरंटो सम पार्ट ऑफ एलए लॉस एंजलिस you'll see the consumption of that big electronic boards are very high अभी ये वाशी में भी लगाया देखा हर जगह बेलापुर में लगाया देखो सिग्नल में हाँ सिग्नल में कारगर में सॉरी कारगर प्लेस लुक हाउ दैट बिग स्क्रीन इज इंस्टॉल्ड अभी सोचो कम से कम ऐसा 10 स्क्रीन लगा दिया इधर हमारा ड्राइवर चढ़ने से पहले वही देखता रहेगा हाँ गाड़ी आके तो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूजर्स एमजीएम स्टूडियो किसी ने विजिट किया है इंडिया में नहीं है ना एमजीएम इट्स इन यूएस एमजीएम मेट्रो गोल्डविन नहीं है दैट्स द बिग प्रोडक्शन हाउस एक टॉम एंड जेरी भी शायद एमजीएम ही बनाता है तो यू मस्ट सी दैट वीडियो स्टूडियो इधर पनवेल में कौन सा फिल्म सिटी है रामू की तो हैदराबाद है इधर मुंबई में भी एक फिल्म सिटी है where they have erected all these giant screens so uses of electricity is very high whereas in India only in cities can you see in rural areas why they need only for lighting maximum TV maybe a refrigerator you can't see AC everywhere in rural area right so jitna zyada aap use karta hai electricity it shows the development of it is it correct can I say Mumbai street is equivalent to the street of Los Angeles nahi sir udhar ka attraction alag hai idhar ka attraction alag right carry on ha Production. Electricity is generated mainly in two ways. By running water, which is hydro turbines. हाँ बस ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डाल बस बाकी पूरा लिखेंगे तो हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी By burning other fuels such as coal, petroleum, and natural gas to drive turbines produce thermal power. Once generated, the electricity is exactly the same. Hydroelectricity. Hydroelectricity is generated by fast flow water which is a renewable. कोने कुछ नहीं India has a number of multi-purpose projects like अंडरलाइन द वर्ड मल्टीपर्पस हाँ टिक बाकरा मंडल टिक दामोदर वैली भी है ना हाँ बस हो गया देन कम टू द लास्ट वाला नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अब इसका इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ देखो मेक अ बोल्ड हेडिंग नॉन कन्वेंशनल अभी वी हैव कंप्लीटेड कन्वेंशनल ये थोड़ा फास्ट करता हूँ वी कैन फिनिश द चैप्टर those who are absent those are mainly for the school exams is it or generally absent school exams okay right now non conventional energy NC energy type in comparison to first point in comparison to conventional non conventional sources of energy are of high value, comma, environmental safe or safe for the environment, environmentally safe, and most important. It is not a comparison, surely. Most important, reduces the rising pressure on which conventional or non-conventional? Conventional energy. Second point, reduces the rising pressure on the conventional. Plus, second,
इसका इंपॉर्टेंस ही दे रहा हूँ. NC, what is NC? Are a blessing in disguise. NC energy are a blessing in disguise. What is disguise? Superpower, है ना? A blessing in disguise because of its wide acceptance. हर एक इंडस्ट्री में नॉन कन्वेंशनल आ रहा है because of its wide acceptance. Next, its crucial role. Third, a second. Its crucial role. What is the spelling of crucial? CRU? CIA. Crucial role cannot be underestimated. To achieve self-sufficiency. इसमें in energy production. तो जितना ज्यादा हम लोग नॉन कन्वेंशनल यूज करेगा उतना कम इंपोर्ट करेगा कन्वेंशनल. लास्ट पॉइंट. Hence, non-conventional NC लिखो. NC proves to be a real. आजकल इस term में ज्यादा यूज करता हूँ. Put it into single element. Modern word आ गया. Sorry. What is this word? Game changer. क्या मतलब है? It's a specific goal. गेम चेंजर का मतलब क्या होता है? हाँ, what is that? How many of you play chess here? Oh, school level पे खेलता है? You know the moves, certain moves, and what is that moves that we are waiting for? Checkmate, checkmate है ना? तो ये वैसा कुछ है. मतलब पेट्रोलियम को चेकमेट कर दिया, डीजल को चेकमेट कर दिया, है ना? एंड और किसको? सर पूरा कन्वेंशनल है ना? अगर ये ज्यादा हम यूज करेगा, हमारा इंडिया का जो पोजीशन है विल बी डेफिनेटली हाई. ऑस्ट्रेलियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर कार्स. ना वाइडली नहीं है बट है. अभी यू नो देयर इज अ वेरी डेंजरस फ्यूल कॉल्ड हाइड्रोजन गैस. Now India is going to use electric engine, no, hydrogen-based electromotors, sorry, locomotives. It is very dangerous, but अब India trial run में चल रहा है. And already India has introduced a brand called Toyota. उसने hydrogen-based car भी बना दिया. अमेरिका ने सबसे पहला hydrogen-based car बनाया, जो इतना बड़ा blast हुआ, अमेरिका ने बंद ही कर दिया. अब इंडिया लेकर आ रहा है. You know hydrogen का environmental friendly. एफिशिएंसी इज वेरी है. हमारा सबसे ज्यादा डीजल यूज करने वाला हमारा वो डीजल इंजन है. इलेक्ट्रिक सॉरी इंजन देखा है रेलवे, इज ह्यूज. अभी अगर डीजल के जगह पर हाइड्रोजन यूज करेगा ना, इट कैन बी वेरी गुड. बट थोड़ा सा टेंशन है, बट गवर्नमेंट इज सेइंग वेरी क्विकली विल गेट इट. सो राइट डाउन द सबहेडिंग ओनली, वी विल मार्क इट एंड विल मूव. 1 सोलर एनर्जी, 2 विंड एनर्जी, 3 biogas, 4 tidal energy, 5 geothermal energy. Shall I give this as an assignment? Out of the, I think majority have shown the video na. Geothermal का भी मैं दिखाया, Larsen and Toubro company. तो अच्छा, the ICC I will show. So remind me next class, I'll show you the video. Out of all this, which energy you feel? Sir, ये मुझे नहीं समझेगा. Everyone knows what is geothermal? Very simple. Look here. When you have studied volcanoes, correct? ये हमारा vent है.
और एक जगह पर आप लोग ने पढ़ा रहेगा मैग्मा रॉक और मैग्मा चेम्बर, करेक्ट। मैग्मा चेम्बर वो है where the average temperature is 3500 degrees Celsius. Is it quite high? Too high, too high. ये जियोथर्मल का मतलब क्या है? They try to drill holes, especially in those areas we have these geysers या hot water निकलता है ना। अब इंडिया में दो जगह पर है, one is in Ladakh, AX whatever, and other is in HP, Himachal. This is I think Pyuga Valley, ये है आपके बुक में है, and this is the place called Manikara. इन दोनों जगह पर हाँ कंपनी का नाम क्या है? The company which is doing this work is L&T. What does L&T stands for? Larsen and Toubro. ये जो जब drill जाता है, they try to not exactly go here, wherever this lava is present, and they try to suck the heat, the waves, not waves. What is that? Steam. And that pipe will be connected to a big tanker-like facility where water is there. वो heat के वजह से पानी गर्म होगा. Understood? There is one more outlet. मैं चलो video next week दिखाता हूँ. One more outlet through which the steam will be passed very quick and फिर वो turbine rotate होगा. Are you understanding? Is it the most dependable? Yes, it is. External factors इसको affect नहीं करेगा क्योंकि उस एरिया पर ड्रिल होता है जहाँ ये heat बहुत ज्यादा है. And इंडिया में ये दोनों जगह पर ये सक्सेसफुली काम हुआ है, but they are not used commercially. पर अभी चालू है and they are extracting the gas. Which gas? This is geothermal. Geo का मतलब जो interior thermal, you know, heat. Imagine 3500 degrees centigrade. So this is very important. And what is tidal? Like we have this high tide, है ना? And low tide. Generally, a high tide is the place where they will locate certain windmill-like position, but it will be inside the water. जब tides बढ़ेगा, यार कर लो. Tides जब बढ़ता है, that force of the water will rotate the turbine. What is that? That is tidal only. Tidal energy. वो मैं दिखाता हूँ, barrages है, video सबका है. Windmill, you know, और windmill का भी कुछ specification रहता है. So you are going to only write the meaning, advantage, disadvantage. सबका दो. ठीक है? I'll meet you in the next lecture. Thank you.